start at 6. 6 now. We should just start. Come here, come here. Come here. नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपसे निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठे रहे, अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों में आज के हमारे प्रमुख अतिथि का आगमन होगा और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। इस 8वें इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ स्पिक मैके का उद्घाटन समारोह अभी कुछ ही क्षणों में आपके सम्मुख आपके सामने प्रस्तुत होगा, जिसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, जो प्रेसिडेंट है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के, तथा आज की गेस्ट ऑफ ऑनर मिसेस कांचनताई गडकरी, जो प्रेसिडेंट है सेवा सदन शिक्षण संस्था की। इनके साथ अनेक मान्यवरों का यहाँ पर आगमन होगा और आज के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आप सबसे फिर एक बार निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर रखें। आज के प्रमुख अतिथियों का आगमन हो रहा है, हम उनका स्वागत करते हैं। तालियों के साथ हम इन सबका स्वागत करेंगे। हम स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी और हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती कांचनताई गडकरी जी का। स्पीक मैके के 8वें इंटरनेशनल कन्वेंशन के उद्घाटन समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत, सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत। मैं सबको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तालियों के साथ हम प्रमुख अतिथियों का स्वागत करेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, जो और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती कांचनताई गडकरी। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रमोद पडोले, हमारे VNIT के डायरेक्टर, श्री तारेम तिवारी जी, स्पीक मैके के चेयरमैन, डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी तथा सव्यसाची डे, नेशनल सेक्रेटरी स्पीक मैके। सभी मान्यवरों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के प्रचार के लिए सोसाइटी स्पीक मैके एक स्वैच्छिक युवा आंदोलन है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, योग, ज्ञान, ध्यान, शिल्प और अन्य पहलुओं को बढ़ावा देकर भारतीय संस्कृति के विरासत के अमूर्त पहलुओं को बढ़ावा देता है। भारतीय संस्कृति में यह दुनिया भर के 300 से अधिक शहरों में अध्यायों वाला एक आंदोलन है। 1977 में IIT दिल्ली में इसकी स्थापना माननीय D किरण सेठ जी ने की, जो आज हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित है। मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां और उनको अभिवादन।
फेस्ट श्रृंखला, विरासत श्रृंखला, छात्रों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय विद्यालय गहनता, पार्क में संगीत, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, विरासत की सैर, प्रख्यात विचारों द्वारा वार्ता, योग शिविर आदि कुछ गतिविधियां हैं जो इस स्पीक मैके की विशेषता है। आज नागपुर के प्रतिष्ठित VNIT द्वारा आयोजित 8वें इंटरनेशनल कन्वेंशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंच पर आसीन हमारे प्रमुख अतिथियों से निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के इस उद्घाटन समारोह की शुरुआत करें, विधिवत शुरुआत करें। मैं दीप प्रज्वलन के लिए इनके साथ आमंत्रित करती हूँ। डायरेक्टर अमृता यूनिवर्सिटीज़ डॉक्टर कृष्ण कुमार, डॉक्टर समीर पिंगड़े डायरेक्टर सिम्बॉयसिस और श्रीमती मृणालिनी फडनीस एक्स वाइस चांसलर सोलापुर यूनिवर्सिटी, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर सोलापुर यूनिवर्सिटी। आपसे भी निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलन में आप पधारें। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लिखते हैं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। दीप प्रज्वलनम अज्ञान तिमिरनाशनम इति श्रद्धा भवति, दीपार्चनया मनः प्रसीदति। दीप प्रज्वलनेन कार्यक्रमस्य शुभारंभः भवतु इति भारतीय सांस्कृतिक परंपरा विद्यते। दीपज्योतिः परब्रह्म, दीपज्योतिः जनार्दनम, दीपो हरतु मे पापम, दीपज्योति नमोस्तुते। दीप अखंड प्रज्वलित रहने हेतु तेल की स्निग्धता आवश्यक है। ऐसे ही हमारी परंपरा प्रकाशमय रहना हमारी जिम्मेदारी है और उसका संवर्धन संगोपन करने के लिए निरंतर साधना रूपी स्निग्धता की आवश्यकता है, जो स्पीक मैके की इस कन्वेंशन में हमें महसूस होता है। सभी मान्यवरों से निवेदन है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। आज हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित है आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी। डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे इज नेशनलिस्ट सोशलिस्ट वर्कर एट हार्ट, a researcher student of political science and a trainer in democracy by profession, a parliamentarian by elevation. Dr. Sahasrabuddhe is postgraduate in English literature and PhD in political science. A member of Parliament Rajya Sabha from Maharashtra since July 16, Dr. Sahasrabuddhe is the president at Indian Council for Cultural Relations. राजकीय विचारवंत तथा नैमित्तिक स्तंभलेखक भी है। रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी इस राजकीय सामाजिक संस्था के महासंचालक है। लोकतंत्र, बियॉन्ड अ बिलियन बैलेट्स और निवडक माणूस इस पुस्तक को महाराष्ट्र शासन ने पुरस्कृत किया है। मैं उनका स्वागत करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय श्री तिवारी जी को, जो हमारे स्पीक मैके के चेयरमैन हैं, हम सब की ओर से आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी का स्वागत करें, सम्मान करें। और VNIT की तरफ से आदरणीय डॉक्टर प्रमोद पडोळे जी से निवेदन है, वो भी उनका सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी का हम सम्मान सत्कार करेंगे। आपका यहाँ आना हमारे लिए प्रेरणादायी है। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के कार्यक्रम की एक छोटी सी भेंट वस्तु।
आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है माननीय कांचनताई गडकरी, जो गेस्ट ऑफ ऑनर है। भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करने वाली संस्था संस्कार भारती की आप अध्यक्षा है। इनका स्वागत भी आदरणीय पडोले जी तथा आदरणीय तिवारी जी करेंगे। उनसे निवेदन है कृपया कांचनताई का स्वागत करें। साहित्य, संगीत, शिक्षा, कृषि, स्वयं रोजगार, अर्थशास्त्र, समाज कारण आदि में रुचि रखने वाली एक आदर्श नारी स्त्री शक्ति के रूप में माननीय कांचनताई को जाना जाता है। माननीय नामदार नितिन जी गडकरी की सुविद्य पत्नी तथा एक प्रगतिशील नारी और समाज सेवा में अग्रसर कांचनताई अनेक संस्थाओं से जुड़ी है। सेवा सदन शिक्षण संस्था, संस्कार भारती, समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक ऐसे अनेक संस्थाओं के माध्यम से लगातार काम कर रही है। आदरणीय कांचनताई का हार्दिक स्वागत। मैं श्री आर.एम. तिवारी जी से निवेदन करूंगी, कृपया वो आदरणीय पडोले सर का स्वागत करें। स्पीक मैके की ओर से माननीय पडोले सर का स्वागत। डॉक्टर प्रमोद पडोले, इनके लिए ज़ोरदार तालियां। हमारे डायरेक्टर है, इनका भी हार्दिक स्वागत। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण करें। कहते हैं रोमा मिश्र यूनान मिट गए सारे जहाँ से, रोमा मिश्र यूनान मिट गए सारे जहाँ से, कुछ खास बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐसी क्या खास बात है हमारी संस्कृति में, हमारी धरोहर में, तो ये स्पीक मैके आपको बताएगा। मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ हमारे चेयरमैन आर.एम. तिवारी जी। इनसे निवेदन है कृपया स्पीक मैके के बारे में तथा आज के इस कंसर्ट के बारे में, इस कन्वेंशन के बारे में दो शब्द कहे। सभी को नमस्कार। स्पीक मैके के इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं स्पीक मैके की तरफ से पधारे हमारे अतिथिगण, मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय सहस्बुद्धे जी, अध्यक्ष ICCR, विशिष्ट अतिथि श्रीमती कंचन गडकरी जी, निदेशक सेवा सदन शिक्षा संस्थान, और हमारे अन्य अतिथिगण डॉक्टर कृष्ण कुमार, निदेशक अमृता विश्वविद्यालय, डॉक्टर मृणालिनी फडणवीस, पूर्व कुलपति शोलापुर विश्वविद्यालय, और इस सुंदर से प्रांगण के निदेशक, VNIT के निदेशक और स्वयं में एक कलाकार, चित्रकार डॉक्टर प्रमोद M. पडोले सर, हमारे स्पीक मैके की पूर्व अध्यक्षा, सब जानते हैं, जो नागपुर से ताल्लुक़ रखती हैं, कुंदा महुरकर जी, और नागपुर के स्पीक मैके के अध्यक्षा डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी जी, और इस अधिवेशन के को कन्वीनर आभा जी, और यहाँ हमारे पधारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने स्कूल से बच्चे आए हुए हैं, उनके साथ टीचर्स आए हुए हैं, और वॉलंटियर्स से स्पीक मैके के जो देश के कोने कोने से आए हुए हैं, उन सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे कार्यों को
स्पिक मेके के कार्यों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं वो सभी मीडिया के बंधु। स्पिक मेके के बारे में आज इस उद्घाटन के अवसर पर बोलने के लिए हमारे यहाँ अतिथिगण हैं। मैं तो सिर्फ स्वागत करता हूँ आप सबका, और साथ में मुझे आदेश हुआ है कि हमारे माननीय जो डॉक्टर किरण सेठ जी हैं, जो हम सबकी प्रेरणा हैं, आप जानते हैं, जिनकी वजह से ये हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और 46 साल से लगातार हम कुछ न कुछ जोड़ते जा रहे हैं। जो बताना चाहता हूँ आप सबको, हमारे अतिथियों को भी, कि स्पिक मेके की यात्रा ठीक वैसी ही है जैसे डॉक्टर सेठ की साइकिल यात्रा, संघर्षपूर्ण लेकिन लगातार चलती हुई। 74 साल की उम्र में उन्होंने पहले साइकिल से छोटी छोटी यात्राएं की, दिल्ली से गुजरात पहुँचे, उसके बाद उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से अकेले यात्रा की। बताना ये चाहता हूँ कि ये यात्रा उन्होंने किसी रिकॉर्ड को बनाने के लिए नहीं की कि गिनीज बुक में या किसी इस तरह के रिकॉर्ड बुक में आएगा। वो इतनी मेहनत मशक्क़त सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आप तक पहुंच पाएँ, हमारी विरासत को आप तक किसी तरह से पहुंचा पाएँ, आपको जागृत कर पाएँ। तो स्पिक मेके 46 वर्षों से देश में और देश के बाहर लगातार हमारी विरासत को पहुंचाने का काम कर रही है, और इसके स्पिक मेके की रीढ़ की हड्डी, इसकी आत्मा, इसके वॉलंटियर हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि स्पिक मेके निष्काम भावना से काम करता है। हमारे यहाँ किसी तरह के बदले या उसके जो हम कर रहे हैं उसके रिटर्न के तौर पे कुछ पाने की लालसा नहीं होती। हम अभी भी खोज रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत इतना व्यापक और इतना सौंदर्य से भरा हुआ है कि अभी तक हम बहुत सारी कलाओं को, बहुत सारे विचारों को खोजने का काम कर रहे हैं। और इसकी प्रेरणा, जैसा पता है, डॉक्टर सेठ हैं, हम लोगों को लगातार ऊर्जा देते रहते हैं। हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश प्राप्त हुआ है। मैं उस संदेश को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। प्रधानमंत्री की तरफ से ये संदेश: सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ, स्पिक मेके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान नागपुर में आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हमारे उन्नत कला स्वरूप मानवता को निरंतर आलोकित कर रहे हैं। शास्त्रीय संगीत व लोक कलाओं में निहित सांस्कृतिक गौरव से जन जन को, विशेषकर युवाओं को जोड़ने में स्पिक मेके द्वारा किए जा रहे प्रयास उल्लेखनीय हैं। कलाएं हमारी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रही हैं और लोगों को सदैव शांति, सद्भाव और समरसता का संदेश दिया है। अपनी इस विरासत पर गर्व के भाव के साथ राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ऐसे में
देश की सांस्कृतिक धरोहरों के संवर्धन के लिए स्पिक मेके जैसे संस्थानों द्वारा किए जा रहे कार्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रहे हैं। अमृतकाल हम सभी के लिए विकसित भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि के लिए एकजुट होकर कार्य करने का कर्तव्य काल है। देश की विविधतापूर्ण संस्कृति व परंपरा को समृद्ध करते हुए हम प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। मुझे विश्वास है कि स्पिक मेके द्वारा आयोजित इस अधिवेशन में कला व संस्कृति से जुड़े लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अधिवेशन से जुड़े सभी प्रतिभागियों और संगीत कला प्रेमियों को बधाई व भविष्य के प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आप सबके लिए संदेश, और मैं आगे की कार्यवाही के लिए रेणुका जी को माइक सौंपता हूं। धन्यवाद तिवारी जी। A diligent researcher and administrator who strictly follows morals and ethics, डॉक्टर प्रमोद पडोळे जी आज यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित है, डायरेक्टर विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं इनसे निवेदन करती हूँ आपके सामने आकर कुछ शब्द बोले, आपके लिए कुछ बोले। सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर प्रमोद पडोळे जी को। धन्यवाद रेणुका जी। Good afternoon to all of you. The chief guest for this today's function, the inauguration of the 8th SPIC MACAY International Convention, Dr. Vinay Sahasrabudhe, the President of Indian Council for Cultural Relations, the guest of honor, Srimati Kanchanji Gadkari, who is the President of Seva Sadan Shikshan Sanstha, Nishatai Kulkarni, all young, I think the office bearers of SPIC MACAY, Nishatai, Kundatai, and the present president of SPIC MACAY, Professor Tiwari, and very, very young and by heart, Padma Shri Dr. Kiran Seth, all the dignitaries of the dais, my colleagues, deans, heads of the department, professors, and the participants from various parts of the countries and also from outside, ladies and gentlemen. It's my pleasure and honor to be here to share this platform for the inauguration of this international event at VNIT. In fact, in the rich journey of VNIT and VRC, we had organized and we have been organizing various international events, but mostly those are related to technical activities. But I suppose this is the first international event which is related to the Indian culture and the music that we are organizing at VNIT. So it's proud moment for all VNITians, and I am sure that all of us will remember this event forever, and this is sort of a milestone in the journey of VNIT, because for the first time we are organizing such a mega event which is related to the Indian culture and music. So therefore, at the outset, I wish to thank the National Committee of the SPIC MACAY and particularly Dr. Kiran Seth and his team for giving us the opportunity to organize such a big event at VNIT and allowing us to host it. As you are all aware that the VNIT or VRC has got a very big legacy. We have been established in 1960 and recently we have celebrated our Diamond Jubilee.
In fact, it started in 2020, but because of the corona, we have to extend the that events, and finally, in 23rd and 24th December of 2022, we completed the events of our Diamond Jubilee. So it has got a big legacy of more than 6.5 decades, and it has produced the distinguished alumni. To just give some example, the Dr. Padma Vibhushan, Dr. Vijay Bhatkar, who was responsible for Param Computer, Dr. Dinesh Keskar, who is 1975 batch, who was the president of Boeing India, Mr. M.S. Unnikrishnan, who was CEO of Thermax India, and then now presently he is working for IIT Bombay and Monash University program at IIT Bombay. He is leading that. Then Hemant Karkarge, who was chief of ATS and who sacrificed his life during the that Bombay blast, and then he was given Ashok Chakra. So that many, then Rashmi Urdhvareshi, who was the director of ARAI, which is 1981 pass out. Then we also produced many sports person also, like Mr. Ashok Bhagwat, who played Ranji for this thing, then Pradeep Gandhe, Jain Kaddare, who represented the badminton and the chess. So we have produced a lot of very distinguished alumni. It is established, as I said, in 1960, and that time it was a moderate beginning. It was REC, Regional Engineering College, having an intake of about 220. But then thereafter, after becoming the NIT in 2002, and then getting elevated to the Institute of National Importance in 2007 by the Act of the Parliament, we then decided to take the VNIT to new heights. Earlier it was just a teaching and learning sort of institute, but later on we decided that we should also give thrust to the research and development activities, the strengthening the this institute and industry interaction, setting up the new centers, the pre-incubation, incubation, startups, and those kind of activities. And I'm very happy to share with you that today we are having more than 100 research and development projects which are sponsored by different agencies, and it is worth rupees 55 crores. So this, I think this is a good achievement for any of the NITs, and we have got good research publications. Then we have developed a lot of technologies, particularly for the rural sector, and also I think in the last 2 years VNIT is among the first who got maximum patent granted by the government of India. So we are doing quite good in that area. Similarly, in the recent past, we also developed various center of excellences. We have got the MOU with the Cement Center and the Cement Center of Excellence, which is named after our beloved chairman who we lost during Corona, Shri Zamdar. So Zamdar Cement Center of Excellence, that is established in the area of Industry 4.0 and the automation. This is a project of about 180 crores, where we have got 11 laboratories, the state-of-the-art laboratories. Similarly, we have got the STIC, that is Space Technology Incubation Center, which is sponsored by the ISRO. So a lot of things are in fact happening at VNIT. And I'm also happy to share with you that in the recent past, we also augmented our infrastructure like anything. We have established the sort of this auditorium where we are sitting. This auditorium was established about 40 years back, and but then this we have refurbished, and earlier the capacity of this was only 700. Now we have increased it almost double. It is 1400. It is fully air conditioned and having all the state of art, the audio and visual system. So this is one. Then we have also got the hostels for the girls and the boys, about G+6 storied, 1000 capacity each. We have got the administrative block, classroom complex, and more this amphitheater. Then we also got good hospital and the sports facilities, like we have created recently the 2 synthetic turf tennis grounds, then football ground, and many things. And
I am very happy that recently we have created the Olympic size, the swimming pool, which has been inaugurated, and it will be functional in the coming week. So a lot of infrastructure is created, and what is more important is that most of the infrastructural projects which are recently developed were sponsored by our alumni association. In last 2 years, about 20 crores infrastructure projects have been sponsored by the alumni. 12 crores are almost completed, and about 7 to 8 crores projects are in pipeline. So I think that our alumni association deserved a very big round of applause. So please. Similarly, as regard the national education policy is concerned, we have implemented it partially and we are doing it. Some of the features of that, like multi-entry, multi-exit, then credit transfer, and those things are already we have implemented. And what is more important is in national education policy is the holistic development of the students. In that respect, I am happy to share with you that from last 2 years we have started the Sanskrit course. So more than 150 students of VNIT, they are undergoing that Sanskrit course. Similarly, just a few months back, we organized the 2 days program related to Indian knowledge systems, and that seminar was inaugurated by the former Chief Justice of India, Shri Sharad Bobde, and a lot of directors from various IITs and NITs, they attended it, and we have decided a sort of a guideline how to implement IKS at various NITs, and because it is basically for the overall development of the students, and I suppose that this particular program is one step in that direction, because our all faculty members and students will be definitely motivated and they will be encouraged to know more about the arts and the musics and the other things other than their technical know-how and the expertise. So this is one step more in that direction, and definitely this will boost in the direction of sort of a facilitated personality of the students will be coming out of this institute. And for that also I thank the SPIC MACAY organizer who has given us this opportunity to organize this event at VNIT. With this, I welcome all of you to the institute and to the green campus of institute. It is not just green in terms of the greenery, sir, but we are generating about 1 megawatt electricity by using the solar panel. We have got our own STP. So that is how we are trying to see that our campus is self-sustainable. And for that we also received the Green Campus Award from Government of India. So to this campus, I welcome you all, and I am sure that your 5 days, this 1 week stay at VNIT will be very fruitful, meaningful, and you will enjoy our stay at VNIT. If you have got any sort of a issue or shortfall, you can just let me know, and we'll see to it that your problem is resolved. And one more thing is that for organizing such a big event, our faculty members, my students, volunteers, and the supporting staff, they have been working here very hard to make this event successful. So I request all of you to give big hand to all my fellow colleagues, volunteers, and the students. With this, once again, I welcome you all to the VNIT campus and wish that this 8th international event of SPIC MACAY will be a great success. Thank you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ डायरेक्टर अमृता यूनिवर्सिटीज़ डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को। इनसे निवेदन है कृपया 2 शब्द रखें। आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, डायरेक्टर अमृता यूनिवर्सिटीज़। Om Namah Shivaya. My humble prostrations at the lotus feet of my beloved Guru, Sadguru Shri
Mata Amritantami Devi, who is also the Chancellor of the Amrita Vishwavidyapitham. I hold the position of the Director of the Kochi campus and Dean of the Faculty of Arts, Humanities and Commerce. Suddenly I got the invitation from the SPIC MACAY for the international convention to be held here. Let me, at the outset, congratulate all the youngsters who are present here for taking part in this convention. Why you are not clapping your hands? I always move along with youngsters for many different activities, and SPIC MACAY is only just one activity in our campus. The main reason for this has been Dr. Kiran Seth, whom I know ever since I have been doing PhD at the IIT Bombay long years back. That is your first level of contact with Dr. Kiran Seth. And till now, I have been keeping constant contact with him. And I am so happy that in 2018, we conducted a youth intensive in the campus, and about 200 students took part in the youth intensive, which was facilitated by about 10 artists. 2019, the number of participants went to 300. 2019, we had to conduct 2 intensives of 5 days duration. 2020, we did not conduct. 21, we did not conduct. 23, when the event was conducted post-corona, the number of participants rose to 750. All this motivation, very silent, behind the scene, behind the curtain worker, Dr. Kiran Seth and the North Kerala chapter coordinator, Shri Unni Variyar. They were the main force behind this, motivating the students, coming and talking to them. And last year, in 2023, recently conducted event, it's called as Samiksha, it is named as Samiksha. 720 students participated in 10 art forms. So, I am extremely satisfied with my connection with Samiksha. And the present chairperson, Srimati Kundan Mahorkar, she herself inaugurated the event, this year's event, through the online participation. I always cherish my association with SPIC MACAY. And after this event, after the Samiksha, I suggested this SPIC MACAY to, why not spread the wings of this SPIC MACAY into the Amrita Vidyalayams. Recently, 2 workshops, residential workshops, in which totally about 200 students took part, were conducted in North Kerala and one in Coimbatore. Both were highly successful. Therefore, each one of you should prompt minimum 5 more of your friends to take part in such workshops. The main reason is our culture is being eroded by the spiritual culture, the art culture, the heritage is being eroded by so many divisible factors, and it should not be absent. Our country is sustaining on our rich heritage, culture, and the philosophical backbone. What the great rishis have given us, what the great artists have given us, the lineage of artists have given us. Therefore, keep up this vigor, keep up this intensity. Each one of you should take a pledge that I will bring next time to such a workshop.
I will bring minimum 5 of my friends, my juniors or seniors, whoever it is. This is Guru Dakshina you can give it to SPIC MACAY and to Professor Dr. Kiran Seth. None else than Kiran Seth. You can see, I prostrated him, then only I came here. And he is still behind the curtain. He is always like that. He doesn't gain anything out of it. Give a big hand to Dr. Kiran Seth. It was out of his initiative that I am standing before you now here. And I am extremely satisfied, and none other than Dr. Anil Sahasrabudhe, whose talk I missed during the last week. He gave a talk in the Amrita University which I missed because of some other commitments of a PhD Viva OC. I could not attend that. So that's the question, first question he asked me when I came here. I told him I am sorry. I missed it, and I was sorry for missing it. That missing has been, that gap has been filled now by the very presence of Professor Anil Sahasrabudhe when I am speaking here. I am, with profound respect, I am thanking him. And all the NITs are great institutions. Quite naturally, an NIT in the name of the greatest of the engineers India has seen, none other than Sri Vishwesvaraya, should hold the mantle for keeping up this culture of Indian tradition, art, music, everything what the SPIC MACAY stands for. I have no other message to say, and my only request is the faculty members also should take their leads in spreading this message across. This is essential, especially in Kerala, what we have seen, the cultural erosion. The gap has been filled quite a lot by the presence of SPIC MACAY. I am trying my level best to make use of SPIC MACAY as a platform to promote this Indian culture and music and arts in all parts of the Kerala. Though I don't hold any official responsibility to SPIC MACAY because of my peculiar position in the university. But still, I silently sit behind and do it. Recently in his Bharati Yatra, we were blessed by Dr. Kiran Seth by his presence in our campus. He stayed in our campus for 2 days. He came on the cycle. And Shri Unnivariyar told me, when you are going to Nagpur, bring him along with you, go along with you a printed chronicle of 2018 to 23, only photographs of all the artists who visited your campus, about 75 of them, and take along with you a chronicle of these photographs. I have printed that chronicle. Maybe some volunteers will distribute to you later. I have brought few copies of it. I am stopping my talk because time is up and running. It's not proper on my part to continue talking like this. My objective is satisfied when you clapped your hands in favor of SPIC MACAY. So let me close with a prayer in Sanskrit. For the benefit of all of you who are attending here, for the benefit of everyone connected to the SPIC MACAY, may the God Almighty give all of you incessant strength, not just strength for one day, incessant strength. Let all of us pray for all the others. That is why I am ending the prayer with Vayam Prarthayami. Airarogya Aishcharyana Abhivardirastu Uttarottaram Abhivardirastu Vayam Prarthayami. Namah Shivaya. थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. हमारे स्पीक मैके की एक मैगज़ीन है जिसका अनावरण आज इस